That's it. Now again refresh the website. You can see if I click on experience, it is displaying the experience here. And if I click on education, it is displaying the education content here. Get all tab link and content. Get all tab link and content. Get all tab link. ऑन क्लिक था, वन क्लिक नहीं था। अरे यार, Now we have completed the about section of our personal portfolio website. Next, we will design the services section. So let's come back to the HTML file. 42.18 42.18 Hi guys, this is Avinash and you are welcome to another video today. In this video, we will on this header section, you can this text effect. So it looks good. Now in the second section, you can, and then we have, if I click on work user. So this, if I take cursor, the background color is changing and my work or portfolio section. Here you can see, and we have the option like downloading this contact form here. Section. So let's come back to the HTML file. प्यार कभी हम This लोग कभी about नहीं div is closing here. तो So after this div, let's add one comment, services. Then we will create a div with the ID services. In this one, again, we will add one div with the class name container. And here we need one title. So let's come back here in this about section. Here I have added one title with the class name subtitle. So let's copy this one and add it here in this services. And we will change the text here. So it will be my services. After this title, we will add list of services in 3 columns. So here we will add a div with the class name services list. And in this one, we will add multiple services. So first we will add some CSS for the class name and ID that we have created right now. So let's come back to the web page right now. And here you can see this text at the bottom. So now we will come back and here we have this services ID. So let's copy this. एक्टिव बनाया, सेक्शन रिपोर्टिव बनाया, कंटेनर बनाया।
this one and come back to the CSS file. First, we will add one comment here. And let's add this ID with the hashtag services. So for this one, we will add some padding. It will be 30 pixel and 0. 30 pixel from top and bottom and left right 0. After that, we have added this services list. So let's copy this one and write it here in the CSS file with a dot because it is a class name. So here we will add display grid and grid template columns. It will be repeat, auto fit, comma, min max 250 pixel, comma, 1 fraction fr. Then we will add the grid gap. I have dedicated video about grid. You can find that link in the description. Grid gap will be 40 pixel and some space from the top. So let's add margin top 50 pixel. So we have added grid layout in this one. Now we will add any div inside this services list that will be displaying as a grid. So here we will add one div. There is no class name or ID. Simply we are adding div open and closing tag. And in this one, we will add the services title and description. So let's add one service title.
Then we will add one description in p tag. So this is the description for the first service. And after that, there will be one link for learn more. So let's add one a tag, and the link text will be learn more. Let's duplicate this one. And here we will change the title. Now change the title in the third one. After that, let's refresh the web page. And here you can see these services in 3 columns. Next, we have to add one icon also. To add any icon, we will come to the website called fontawesome.com. On this website, you have to create an account. It will be for free. Then go to Kits and click here. Then you will get this type of script. It will be for one-line script that you have to add in your HTML file. Let me come back to the HTML file and add it just before this closing head tag. So I have added this font or some kit a script here. You just add your services. So for this one, we will add some padding. It will be 30 pixel and 0. 30 pixel from top and bottom and left right 0. After that, we have added this services with a dot fr. You about fifth one. Now, so we This is the simplest explanation of difference between margin and padding ever. Let's say we have two suitcases. Each one of them represents an HTML element. If we want to move them apart, we need to use margin. Let's add some clothes inside. If we want to move it more to the inside, we need to use padding. This is the simplest explanation of difference between बैटिंग अंदर होगा है ना
ओके, सो टुडे विल टॉक अबाउट सीएसएस। तो हमने पोर्टफोलियो में ये डिजाइन तो देखा होगा, सिंपल सा 3 बॉक्सेस हैं एक लाइन में, इसमें कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। बट द थिंग इज व्हेन यू डेवलप दिस और इसको तुम मोबाइल में खोलोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज कि तुम मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए अलग अलग तो बनाना नहीं चाहते। There is one property called flex और तुम्हें बस मोबाइल के लिए एक ये लाइन ऐड करनी है, flex डायरेक्शन कॉलम एंड डन। तुम्हारा मोबाइल पे अब ऐसे खुलेगा एकदम मस्त, एंड इफ यू गो टू योर डेस्कटॉप तो ऐसा खुलेगा। देखो, इफ यू डोंट नो अबाउट फ्लेक्स एंड ग्रिड, तुम्हें सीएसएस में फ्लेक्स और ग्रिड तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बिना यू कांट डू एनीथिंग। एंड टू लर्न यू कैन सर्च फॉर लर्न फ्लेक्सबॉक्स द इजी वे, केविन पॉवल करके टेस्ट वीडियो 35 मिनट्स की, एंड फॉर ग्रिड लर्न सीएसएस ग्रिड द इजी वे, सेम अराउंड 35 मिनट्स की। I'll share the link also in description and I have a task for you. After learning this, तुम्हें एक काम करना है, एक डिजाइन बनाना है। On desktop you'll have 4 boxes in one line and on mobile you will have like two boxes. Okay, so today we'll talk about CSS. तो हमने पोर्टफोलियो में ये डिजाइन तो देखा होगा, सिंपल सा 3 बॉक्सेस हैं एक लाइन में, इसमें कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। बट द थिंग इज व्हेन यू डेवलप दिस और इसको तुम मोबाइल में खोलोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज कि तुम मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए अलग अलग तो बनाना नहीं चाहते। तो देयर इज वन प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्लेक्स और तुम्हें बस मोबाइल के लिए एक ये लाइन ऐड करनी है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड डन। तुम्हारा मोबाइल पे अब ऐसे Grids are two-dimensional. I can place things on it horizontally, vertically, and both simultaneously. Creating how many rows and columns we want defined. To define rows and columns, we use the grid template rows and grid template columns properties. They work by defining a track for each value that you pass it. If I give 100 pixels to the columns, now I have one column of 100 pixels. If I add a second value of 100 pixels, now I have 2 columns of 100 pixels, and so on. I'll copy the values from my grid template columns and paste them in the grid template rows. Now I have a grid with 6 rows and 6 columns, and all of the cells have the same size. If I want to position an item, I can select it and give it the grid row start, grid row end, grid column start, grid column end properties. Inside of each will go some line numbers. Let's say I want item 1 to look like this. Then that means item 1 starts on line 1 of both the rows and the columns. We also see that item 1 ends on the 3rd line of the rows and ends on the 5th line of the columns. We have added grid. हेलो गाइस एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में।
तो सबसे पहले जान लेते हैं CSS ग्रिड होता क्या है। तो CSS ग्रिड बेसिकली यार एक 2 डायमेंशनल तरीका है जिससे हम हमारे वेब पेजेस को 2D लेआउट दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी यार पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया फ्लेक्स बॉक्स और उसके अंदर कुछ रोज और कॉलम्स थी, उसी तरह से यार यहाँ पे CSS ग्रिड के अंदर भी हमारी कुछ रोज और कॉलम्स की मदद से हम हमारे बॉक्सेस को डिजाइन करेंगे और इसके अंदर बहुत अलग अलग फीचर्स है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को बहुत ही आसान तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रिड लेआउट दिखता कैसा है। तो ग्रिड बेसिकली एक कलेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जिसके ऊपर हम हमारे एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं। अब इसके अंदर यार बेसिकली हमारे जो विड्थ और हाइट के हिसाब से हमारे बॉक्सेस चेंज नहीं होते हैं और उसकी वजह से हमारे वेब पेजेस के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली यार 1 डायमेंशनल लेआउट है जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन CSS जो है वो 2D लेआउट होता है। अब इसके अंदर हमने देखा था कुछ एक कंटेनर होता है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, सिमिलरली यहाँ पे यार CSS ग्रिड के अंदर भी एक कंटेनर होगा, एक पेरेंट एलिमेंट होगा और उसके अंदर हम हमारे बाकी जो एलिमेंट्स है उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यार ग्रिड लेआउट दिखता कैसा है। तो ग्रिड लेआउट के अंदर भी हमारे कुछ कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये कॉलम्स है और यहाँ पे सिमिलरली कुछ रोज होती है जो उन कॉलम्स के ऊपर हम बनाने वाले हैं और बीच में यहाँ पे कुछ गैप्स है जो आप देख सकते हो, है ना। तो बस ऐसा कुछ दिखता है हमारा ग्रिड लेआउट और इसके ऊपर हम हमारे बॉक्सेस या एलिमेंट्स को डिजाइन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं हमारा कोड एडिटर और कोड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार इसमें VS कोड खोल देते हैं और इसके अंदर यार मैंने एक फाइल बना रखी है grid.html नाम की, है ना। अब इसके अंदर मैं डॉक टाइप HTML लिख देता हूँ और फिर इसमें लिख देते हैं CSS ग्रिड, ओके। और फिर बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर यार मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ फिर से पेरेंट एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो div डॉट कंटेनर लिखेंगे और ये हमारा कंटेनर तैयार है। अब इसके अंदर यार कुछ और डिव्स बनाएंगे जिसके अंदर हम हमारे बॉक्सेस लिखने वाले हैं। तो उसके लिए यार इसकी हम क्लास दे देंगे आइटम्स और फिर इसके अंदर मैं फिर से एमिट का यूज़ कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा ना, हमने सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस खोल लिए इस आइटम्स क्लास के आगे। अब इसके अंदर हम हमारा वो जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मेरे को लिखना है डब्बा, ठीक है, और इसके आगे मेरे को नंबरिंग लगानी है तो मैं डॉलर लिख देता हूँ। तो जहाँ पे भी हमने डॉलर लिखा है वो रिप्लेस हो जाएगा इस मल्टीप्लाई बाय 4 से, मतलब सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 ऐसे 5 बार हमारे 5 एलिमेंट्स में आ जाएगा। जैसे मैं इसको एंटर दबा रहा हूँ आप देख सकते हो यार 1 2 3 4 5 आ गया है, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं इन सारे आइटम्स को और इस हमारे कंटेनर को। तो स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे और सबसे पहले कंटेनर के अंदर हम लिख देते हैं, इस कंटेनर का डिस्प्ले चेंज कर देते हैं जो कि हमारे को ग्रिड करना है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखा मैंने कंटेनर और इसके अंदर हम जाते हैं लिखते हैं डिस्प्ले और लिखेंगे ग्रिड। तो डिस्प्ले कंटेनर करने से यार हमारे कंटेनर को हम एक पेरेंट एलिमेंट बना देंगे और इसके अंदर के हमारे बॉक्सेस जो होंगे वो उस ग्रिड के अंदर दिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन एलिमेंट है और इसके अंदर के हमारे जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है वो आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्प्ले ग्रिड और इसके अंदर हम जितने भी आइटम्स है उसको भी स्टाइल कर देते हैं। तो आइटम्स में मैं लिख देता हूँ सबसे पहले हम इसको कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे कुछ लाइट सा, मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन दे रहा हूँ या फिर हम थोड़ा सा डार्क दे देते हैं तो लाइट कोरल दे देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम कुछ बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर हम देंगे यहाँ पे 3 पिक्सल और यहाँ पे कलर में मैं दे रहा हूँ ग्रीन और फिर हम इसका टाइप लिख देते हैं जो कि है सॉलिड, ठीक है। और इसके बाद में यार हम बॉर्डर को कुछ रेडियस भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस और फिर मैं लिख रहा हूँ 3 पिक्सल्स और सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार इस जितने भी हमने डब्बे बनाए वो सारे आपको एक साथ दिख रहे होंगे, लेकिन अभी तक हमने यार यहाँ पे कुछ यूज नहीं किया है। तो हम इसके अंदर यार एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो इससे बेसिकली हम अपने जितने भी बॉक्सेस है उनको एक कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, कुछ कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम और फिर मैं इसमें साइज लिख देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल के 3 कॉलम बना दिए, ठीक है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे साइज लिखी है उस साइज के हमारे कॉलम बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला कॉलम होगा वो 200 पिक्सल का होगा और दूसरा 200 और तीसरा भी 200, ठीक है। तो सेव करके एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्बा 1 जो है वो हमारा 200 पिक्सल का आ गया, डब्बा 2 है वो भी 200, ये भी 200। तो अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप इसको 100 कर दो। तो आप देख सकते हो यार ये दो जो कॉलम्स है हमारे वो छोटे आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यार ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यार अगर मैं रोज लिखूं तो यहाँ पे हमारी ये रोज में कन्वर्ट हो जाएगा और सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहला हमारा जो रो है वो 200 पिक्सल का है, फिर 100 और फिर 200, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक यूनिट का यूज कर सकते हैं जो कि है फ्रैक्शन। तो एक बार मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1FR 1FR 1FR, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 हमारे जो डब्बे हैं वो सेम साइज के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार हमने 1FR लिखा था तो मतलब सारे डब्बे इक्वल फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गए,
ठीक है। अब अगर मैं सेकंड वाले को 2 कर देता हूँ तो क्या होगा, तो बेसिकली यार हमारा 2 जो है वो रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होगा, मतलब डबल होगा बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, उसी तरह से यार आप 3 4 5 कितना भी दे सकते हो, तो बेसिकली यार ये फ्रैक्शन है उस पूरी विड्थ का। ठीक है, और इसमें यार हमको गैप देना हो तो हम ग्रिड गैप नाम का एक प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, और इसके अंदर हम फिर से कुछ साइज दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल लिखा है और इसको मैं ग्रिड कर देता हूँ। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, जैसे हम मार्जिन का यूज करते हैं उसी तरह से यार यहाँ पे ग्रिड गैप का यूज अगर हम करेंगे तो हमारे जितने भी ग्रिड्स है उनके बीच में, जितने भी बॉक्सेस है उनके बीच में कुछ गैप आ रहा है ना। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो यार, हमको 3 कॉलम बनाने के लिए 3 बार इस एफ को लिखना पड़ता है। तो मान लो यार आपको 3 बार नहीं लिखना है, तो आप एक फंक्शन का यूज कर सकते हो जिसका नाम है रिपीट, और सबसे पहले लिखोगे यार जितने भी हमारे टाइम्स आपको रिपीट करवाना है। तो जैसे यार हमको 3 टाइम्स उसको रिपीट करवाना है, तो लिखा 3 और यहाँ पे आप लिख दोगे वैल्यू जो कि है 1 FR। तो ये 3 बार 1 FR रिपीट हो जाएगा, उससे हमारी 3 कॉलम्स दिखने लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यार सिमिलर आउटपुट आ रहा है। अब आपको अगर इसको 4 बार रिपीट करवाना है तो आप यहाँ पे 4 लिख दो, और यहाँ पे हमारे जो डब्बे हैं वो 4 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देखने वाली यहाँ पे ये है कि इन बॉक्सेस का जो साइज़ है वो अभी ऑटोमेटिक है, मतलब ये इम्प्लिसिट ग्रिड है। तो कैसे, यहाँ पे मैंने डब्बा 1 लिखा है तो उतने की साइज़ का हमारे यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके लोअर 200 डाल देता हूँ, मतलब मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार हमारा बॉक्स उस साइज़ के हिसाब से बड़ा हो गया है ना। जितना हमारा टेक्स्ट है उतना बड़ा हमारा यहाँ पे बॉक्स हो गया है। और अगर मैं इन बॉक्सेस का साइज कुछ फिक्स रखना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं यार। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे कंटेनर में जाना है और लिखना है ग्रिड ऑटो रोज। ठीक है, और इसमें हमको साइज लिखनी है जो भी हमारे उस रो की, मतलब जो रो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो हमारा लेंथ है। तो हमको हाइट क्या देनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने दे दी हाइट यार 100 पिक्सल। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यार हाइट अब 100 पिक्सल की हो गई, और उस वजह से हमारा जो कंटेंट है वो फिट नहीं आ पा रहा है और वो ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यार सिमिलरली मैं ग्रिड रो की जगह अगर मैं ग्रिड ऑटो कॉलम दूंगा तो हमारी वो विड्थ चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ और सेव करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल वाइड हमारा ये जो कॉलम है वो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई मिनिमम वैल्यू दे दे, जिससे कि मिनिमम हमारा बॉक्स इतनी साइज का तो रहे ही रहे और मैक्सिमम वो अपने कंटेंट के हिसाब से बड़ा भी छोटा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम यार मिन मैक्स नाम का एक फंक्शन है उसका यूज लेंगे, और सबसे पहले हम यार मिनिमम इसकी विड्थ दे देंगे, या मिनिमम अभी मैं रोज लिख रहा हूँ तो ये हाइट है, तो मिनिमम हाइट दे देंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100 पिक्सल जो कि मैंने मिनिमम हाइट दी है। ठीक है, और कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैं यहाँ पे ऑटो कर रहा हूँ जिससे कि वो जितना मैक्स होना चाहे उतना मैक्स हो जाएगा। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे भी उसी चेंज को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस बार लिख रहा हूँ 50 और सेम यहाँ पे ऑटो भी लगा दिया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हो यार जो हमारा पहले वाला आउटपुट था वैसा ही यहाँ पे आ रहा है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे डब्बा 1 कर दूं तो क्या होगा देखते हैं। अब क्योंकि यार हमने यहाँ मिनिमम लगा रखा है तो उस वजह से हमारा जो डब्बा है वो layout in this one. Now we will add any div inside this services list that will be displaying as a grid. So here we will add one div. There is no class name or ID. Simply we are adding div open and closing tag. And in this one, we will add the services title and description. So let's add one service title. Then we will add one description in p tag. So this is the description.
description for the first service. And after that, there will be one link for learn more. So let's add one a tag, and the link text will be learn more. Let's duplicate this one. And here we will change the title. Page. Next, we have to add one icon also to now on 8 there will we will add one class name or id. Simply we are adding div open and closing tag, and in this one we will add the service title 50 pixel.
Add grid. So here we will add one div. There is no class. We will for learn mode. So
After that, let's refresh the web page, and here you can see in the and let's do one a. There will see the this one the web to on any icon here you can tag will be visible at one with name add 40 pixelated video about grid. You can find that grid gap will be let's add. So we have added grid results. Click see next it will be for free. Then go to kits and click here. Then you will get this type of script. It will be for one-liner script that you have to kits. Any icon, we will come to the website called fontawesome.com. On this website, you have to create an account. It will be for free. Then go to kits.
and click here.
भगवान। हाँ For free, fontawesome.com. On this website, you have to create an account. It will be for free. Then go to Kits.
key, then go to kits and go to kits and click here. Then you will get this type of script. It will be for one-line script that you have to add in your HTML file. Let me come back to the HTML file and add it just before this closing head tag. So I have added this font awesome kit. A script here. You just add your own script. So let's come back and again come to this website and click on icons. Here in this search box, you can search for any icon that you want to use on your website. So let me search for code. Let's click here. Click on this code. It will be copied. So let's come back and add it here where you want to display the icon. So we will display this icon in this first service just above this title. So here, let's add a space and add this. One line of HTML code. So we have added one icon. Let's come back and we will search for another icon. So here we will search for another icon called crop.
let me use this one. Click here and paste it here. Now we will search for another icon. Here we will search for app. Let's click this one. Copy this one and paste it here in this third service. After adding all the three icons, let's come back to the website again. Here you can see these icons just above the service title. Next, we have to add some CSS to design this layout. So we will come back to the HTML file, and you can see we have added services list, and in this one we have the div. So come back to the CSS file, again write this class name, services list and div. So for all the individual services, we will add the background. Write this color code. Then we will add some a space inside this box. So we will add padding of 40 pixel. Then let's change the font size and font weight. Now we will add the border radius so that the corners will be round. You can see we have this gray color of box for all the services. Round. You can see we have this gray color of box for all the services. Next, we have to change the size for this icon. So let's come back, and here you can see we have these icons with the
tag I. So let's come back to the CSS file. Here we will add the same thing, services list div, and then write I for the icon. In this one, we have to increase the font size. It will be 50 pixel. Then some space at the bottom. So you can see the increased size for the so you can see the increased size for the icon. Next, we will add the CSS for the title. We will increase the font size for these title, and we will also decorate these links, which is learn mode. So let's come back. Again, copy this one. Then write H2 because we have added the services title in H2 tag. So font size will be 30 pixel. Then font weight, it will be 500 and margin at the bottom. After that, we will decorate the link. So again, write this, then write A. And for this link, we will add text decoration none. Color will be white color. Then font size, it will be 12 pixel, very small, and margin from the top. Display will be inline block. After adding this, again refresh the website. You can see we have some space around this title, and the font size for this title is looking good. And this learn more text is also looking good. Let's come back, come to the HTML file. We will make it capital L, so it will look good. So after adding this, we will add the hover effect on these services list. So let's come back and come to the CSS file. Here, just copy this one and paste it here. Then write colon hover. So whenever we will take cursor over any services, it should change the background color. So we will add background and another color code. After that, we have to move this services a little bit up. So let's add transform translate by minus 10 pixels. So it will move the box by 10 pixels.
So in this one, we have to add some transition. So here we will add transition, background. It will be 0.5 seconds, comma, transform 0.5 seconds. After adding this, again refresh the website, and here you can see if I take cursor, it is moving up. It will be. So here we will add background. It will be 0.5, so pixel. So in this one, we have to add some transition. So here we will add transition.
जरा सा महसूस हुआ है हाय दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू जब हाय दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू दिल तू जान तू हाय दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे मैं दिलहारी जो तेरे ना हुए हंसता रहता हूँ कैसे तेरी खुद तूने जो ना कहा मैं वो सुनता अब ख्वाब सा तेरी पिकासों में तेनू मैं right up to heaven with हर गम संग तेरे पिकासों में तेनू मैं बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा मंगा ही दुआवा मैं ते- तेनू मैं बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा मंगा ही दुआवा मैं तेनू मैं बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा मंगा ही दुआवा मैं
background, it will be 0.5 seconds, comma, transform 0.5 seconds. After adding this, again refresh the website, and here you can see if I take cursor, it is moving up, and the color of the background is also changing. This border radius is not working. Let's see. Here we have added border right. It will be border radius 10 pixel. Now you can see the corners are round. So we have added 3 services. After adding these services, we will add another section called portfolio or my work. So let's come back to the HTML file, and here after this div we will add one comment, portfolio, then we will add one div with the ID portfolio. In this one, again, we will add one container, and again we will add one subtitle. So let's copy the subtitle from here. And paste it here. Here we will change the text. It will be my work. Let's refresh the website. Here you can see
this title. So this tab. In the next section, you can see my service and it is moving up by some pixels. And let's scroll. Then we have the my work or portfolio section. Here you can see beautiful hover effect. When I take cursor, the background image gets zoom in. And then we have these text coming from the bottom and this external link. Then we have this button with hover effect. And then we can see the contact information like email ID, phone number, social. Here I have attached the PDF file. Copyright form is Google. Right now it is blank. You can see name, email, Avinash message. So we have added, you can see appear after 5 seconds and information here. For Google Sheet portfolio, it will scroll the website to the portfolio section. And if I click on the contact, it will scroll the website section. My work. After this div subtitle, paste it here. Site. Here you can see this title called my work. Next, we need some space around this. So let me come back and copy this ID portfolio, write it here in this CSS file. First, we will add one comment. Then write this ID with the hashtag. And here we will add some space. So we will add padding 50 pixel and 0, 50 pixel from top and bottom and 0 from left and right side. So you can see we have even more space around this text, which is now again we need even top and bottom and 0 from left and right side. So you can see we have even more space around this text, which is my work. Now again we need grid layout where we will display the list of work. So let's come back and come to the HTML file. After the subtitle, we will add one div with the class name work list. In this one, we will add the in this one we will add the first work. So here we will add another div with the class name work. So first we will add one image. Write the file path of the images. It is images slash.
work1.png. Then duplicate this one and change the image. It is 2 and 3, work 3. Let's refresh the website. You can see 3 images here. So we have to arrange these images as a grid. So again, come back and copy this class name work list, write it here in this CSS file. And here also we will add the same CSS that we have added in the services. So let's see here. We have added display,
grid template column, and grid gap. So just copy this 3 line, and we will copy this margin also, margin top. So paste it here in this work list. After adding this, here we have the single work with the class name work. So write this class name here, work, and in this one we will add the border radius 10 pixel, position relative, and overflow hidden. Again, write this class name, then write img. In this one we have added the image. So we will add width 100%, border radius 10 pixel, display it will be block. That's it. Now you can see these images in grid layout.
Next, we have to add some information over this image, like there will be one title, text, and one link. For that, we will come back to the HTML file, and after this image, we will add one div. So let's add space here, and here we will add one div with the class name layer. And in this one, we will add one title. So let's add the title in H3. Then we will add one description in p tag. So this is the description. And then we will add one link. So we will add a tag. And in this link, there will be no text. We will just add one icon. So again, come back to the Font Awesome website. And in this search box, we will search for link. I will use this icon, external link alt. Click here. Here and click on this code and add it here in this HTML file within this a tag. So we have added this one. Let's come back to the website again. You can see this text.
text, description, and this link icon just below this image. Similarly, we will add these things in all the work. So let's come back and copy this div, which is layer. And add it here in this second one, and in the third one we will change the text. You can see this title and description and link in all three work. Next, we have to change its position, and we will also add the background color. This text will be displayed over this image, so we have to add the position absolute. So let's come back, and here we have added the class name layer. So copy this, write it here in this CSS file. So for this layer, we will add width. Width will be 100%. Then we will add height. Height also 100%. Next, we have to add the background. So in this background, we will add gradient color. So let's add linear gradient. First color code, it will be RGBA 0.5. It will be black color with 60% opacity. Then we will add this color code. After जी जी रूम पे हो? हाँ हाँ अभी हो ना? आके रहोगे ना? हाँ हाँ अच्छा, तो 1 बजे का तो चावल बिठा देना। खाना खा लिए हो? हाँ ठीक है, 1 बजे कितना का कितना चावल? 1.5 गिलास वो फ्रीजर के बगल वाला ना? है नहीं, किचनवा में है, नीचे बल्टिया में। ठीक ठीक।
After that, we will add the border radius. It will be same 10 pixel. After adding this, let's see this on web page. So it is at this position. So we have to change its position. So let's come back. Here we will add position absolute. Then we will add left. It will be 0. And bottom 0. Now overflow hidden. You can see it is just over the image. We have to move these text in the center. Overflow hidden. You can see it is just over the image. We have to move these text in the center. So let's come back, and here we will add display flex, align items center, justify content center, and flex direction. It will be column. Then we will add some padding, 0 and 40 pixels. So we will add some space in left and right side. Then we will add text align center. After adding this, again come back to the website. You can see these text in the center. Next, we have to change the font size, and we will also decorate this icon. So let's come back, and here we will add dot layer h3 because we have added the title in h3 tag. Let's add the font weight. It will be 500 and some space. Margin bottom 20 pixel.
Now we have to decrease the size for this text, which is description text here. So let's come back, and in this one, which is for the layer, here we will add the font size. Font size will be 14 pixel. So you can see decreased size for this text. Next, we will design this icon. So you can see decreased size for this text. Next, we will design this icon, which is the link icon. So again, come back, copy this layer, and in this layer we have the A tag. So in this A tag, we will add the space, margin top 20 pixel. Then we will change the color, this color code. After that, we will add text decoration none. Then font size 18 pixel and line height 60 pixel. Then background will be white color. Now we have to define the width and height. So width will be 60 pixel and height also. Then we will
add border radius. Border radius will be 50% so that it will be a circle, and text align center. After adding this external link icon looks good. So right now, these contents are displaying by default, so we have to hide this one, and it will be visible whenever we will take cursor over anyone. So to hide this one, let's come back. Here we have added height 100%, so we will make it 0. And let's see, it is hidden. And whenever we will increase the height, so it will again become visible. Before that, we have to add one more hover effect. If I take cursor over it, this image should zoom in. So let's come back, and here we will add this work. Paste it here, work, hover. And whenever we will take cursor on this one, it should increase the size for the image. So we will add img and write transform scale 1.1 like this. And let's come to the top over here. In this work img, we will add 1.1 like this. And let's come to the top over here. In this work img, we will add transition transform 0.5 seconds. After adding this, you can see if I take transform 0.5 seconds. After adding this, you can see if I take cursor, this image gets zoom in. So this is the first effect on this work image. Next, we have to display the content that we have added over this image, which is hidden right now. So let's come back. You can see we have added height 0 for this layer. So again, we will add this one, then write dot layer. And write height 100%. So it will increase the height. Let's come back to the layer, which is here. So here we will add transition height 0.5 seconds. You can see when I take cursor, this text is coming from the bottom.
After adding this, we will add one button. So let's come back. Come to the HTML file. You can see this div work list is closing here. So here we will add a space and add one link with the a tag. So here, come to the HTML file. You can see this div work list is closing here. So here we will add a space and add one link with the a tag. And in this one, we will add the link text see more. We will add one class name. So write the class name called btn. You can see this link here at the bottom, see more. So we have to move its position and we will decorate it as a button. So let's come back and copy. with this class name btn, write it here in this CSS file, right? .btn. In this one, we will add display. Display will be block. Then margin, we will add margin 50 pixel from top and bottom, left, right, auto. So it will be in the center. Then write width. Width will be fit content. Then border. Border will be 1 pixel solid
and this color. After that, we will add some padding. That will be some space inside the button. Border radius will be 6 pixel. You can see it looks like a button. We have to change its color also, and we will remove this underline. So here we will add text decoration none and color white. So it is looking good. Next, we will add one hover effect on this button. So let's come back and copy this button, then write : hover.
Let's add the background. Background will be this color code. Whenever we will take cursor, the background will be changing. And here in this one, we will add transition. Transition for the background. Let's add transition background 0.5 seconds. You can see if I take cursor over this button, the background is changing. So finally, we have completed. Changing. You can see if I take cursor over this button, the background is changing. So finally, we have completed this portfolio or my work section also. Next, we will create the contact section where we will add the contact information like phone number, email ID, and we will also add one contact form. For that, let's come back to the HTML file, and here we will add one comment, contact, and let's create one div with the ID contact. So here we have one div with the ID contact. In this one, again, we need one container. And within this container, we will add contents in two columns. In the first one, we will add the contact information like phone number, email ID, and social media links. And in the right column, we will add the contact form. So here we have to create two columns. So first, we will create one div with the class name row. Now in this row, let's create one div with the class name contact left. It will be for the left column. Just duplicate this one.
here we will add contact right. So it is for the right column. Now in the first one, we will add one subtitle. So let's add one h1 tag. In this one, we will add the text contact me and the class name that we have already used, subtitle. And after that, we have to add the email ID in p tag. Then we will add the phone number. And next we will add the social media icons. So let's add the div. With the class name social icons. And in this one, we will add some icons. So here, let's add one a tag. And in this href, we will add the URL of the social media profile. So let's come back to the Font Awesome website. Of the social media profile. So let's come back to the Font Awesome website. Here we will search for the icon Facebook. Let's click on this one, copy this and paste it here where you want to display the icon. Let me duplicate it. You can go on the Font Awesome website and search for another icon code. I already know, so here I will write. After adding this, let's come back to the website again.
see contact me, this email ID, phone number, and social media. Links. Suppose you want to add the profile link here. So let's come back, and in this href, here we will add the social media profile link like this one.
write the complete profile URL here. And now we have to add some content in the right column. Contact me, this email ID, phone number, and social media links. Suppose you want to add the profile link here. So let's come back, and in this href, here we will add the social media profile link like this one. Write the complete profile URL here. And now we have to add some content in the right column, which is here. And in this one, we will create one form. So here we will add form tag. And in this form, there will be some column. And now we have write the complete profile URL here. And now we have to add some content in the right column, which is here. And in this one, we will create one form. So here we will add form tag. And in this form, there will be some input field for the name, email ID, and message. So first we will add one input field for the name. Input type will be text. Name will be name. Then placeholder, it will be your name for the name, email ID, and message. So first we will add one input field for the name. Input type will be text. We'll add one input field for the name. Input type will be text. Name will be name. Then placeholder, it will be your name. And this field will be required. Next, we will add another input field, which is for the email. Name will be email. Placeholder, your email, and it is also required. Then we will add the text area. In this text area, we will add the name called message. Then we will add the text area. In this text area, we will add the name called message. Remove this ID and columns row. It will be 6. And then placeholder. In this placeholder, we will add your message. After this text area, there will be one submit button. So we will add button, type will be submit, and button text will be submit. Let's check this web page again. Here you can see the contact information in the left side and this form input fields in the
right here you type will be submit button. So we will again submit. Let's check this web page again. Here you can see the contact information in the left side and this form input fields in the right side. Next, we have to define the let's check this web page again. Again, here you can see the contact information in the left side and this form input fields in the right side. Next, we have to define the width for left and right columns. So let's come back, and here we have to add the CSS for this contact left. Copy this one, come to the CSS file. First, we will add comment here, contact. Then write this class name contact left for the left column. Now for this left column, we will add the width. So first we will add the flex basis. It will be 35% for the left side. Now just duplicate it and change the class name. It will be right. For the right one, width is 60%. So flex space is 60%. Now this form is starting from here.
So first we will design the text and icons which is in the left side. So let's come back and copy this class. Name, contact left, then write P. In this P, we will add margin from top. It will be 30 pixel. We have some space here. Now for this email ID and phone number also, we will add one icon. So come back here and here we will search for one icon. Let me search send. Let's click here and copy this one. Add it here in this P tag. This icon and email. ID. Again, come back and here we will search for phone icon and email ID. Again, come back.
this icon and email ID. Again, come back and here we will search for phone icon. So let me search phone. Then I will use this one. Click and paste it here. In front of the phone number. Again, refresh the website. So here you can see we have the icon in front of email space. Then write P. In this P, we will add margin from top. It will be 30 pixel. We have margin from top. It will a space here. Now for this email, it will be 30 pixel. We have some space here. Now for this email ID and phone number also, we will add one of the phone number. Again, refresh the website. So here you can see we have the icon in front of email ID and phone number. So we have to design these icons. So let me come back and in this CSS file, we will add contact left P, and in this P we have added the icon with the I tag. So for this I, we will add the color. And then we will add the margin from the right side and font size. So this icon is looking good. So this icon is looking good. Next, we will design the social icons. So here you can see the class name, social icon. Copy this one, write it here in this CSS file. Here we will add margin from the top.
it will be 30 pixel. Again, add this class name, then write a tag, and here we will add text decoration, none. Font size 30 pixel, then margin from the right side, it will be 15 pixel, then color will be this one, and after that display will be inline block. So this social media icons So this social media icons are looking good. Next, we will add the hover effect on these icons. So let's come back and copy this one, paste it here. So whenever we will take cursor, it should change its color. So first we will add colon hover, then write color. This is the color code. After that, we have to move this icon little bit up. So we will add transform translate y minus 5 pixel. So it will move the icon up by 5 pixel. And in this social icon A, we will add transition code. After that, we have to move this icon little bit up. So we will add transform translate y minus 5 pixel. So it will move the icon up by 5 pixel. And in this social icon A, we will add transition transform 0.5 seconds. You can see if I take cursor, it is moving up. And the color is changing. After the social media icon, I will add one download button where you can attach any downloadable file like your CV in PDF file or any other file. So let's come back, and in this HTML file, after closing up this, which is for the social icon, here we will add one a tag, then write the link text download CV.
So you can see this link here. Next, we have to decorate it. So let's come back, and here we will add one class name, btn. So you can see some changes here. Now we have to move this button in the left side. So let's come back and we will add one more class name, btn2, like this. Next, copy this class name btn2, come back to the CSS file. Here we will add btn. It will be .btn.btn2. There is no space. So here we will add display inline block and background this color code. So you can see background this color code. So you can see the colored background for this button, and you can see this button in the left side. But right now, if I click on this button, nothing will happen. So next we have to attach one downloadable file in this button. For that, you need any file that you want to attach. In this folder, you can see I have added one file called mycv.pdf. So we have to attach this file with the download button. It is in the images folder. So let's come back, and in this HTML file,
In this href, we will add the file path images / mycv.pdf. So we have to attach this file with the download button. It is in the images folder. So let's come back. And in this HTML file, in this href, we will add the file path images / mycv.pdf. Then we have to add download. That's it. So whenever we will click on this button, it will start downloading this attached file in the browser. So let's come back to the website, and you can see